Good afternoon, everyone. This is your computer class. So take out your computer book. Okay, so last time we have finished learning the keyboard, right? So from today we will start the mouse. Okay, today we will learn about the mouse. First, we will know the definition of mouse. What mouse exactly is. Okay, so you can also look it in your book in page number 35, chapter 5, the mouse. A computer has a mouse to help you play games and draw pictures. It looks like a house. It looks like a house mouse with a long tail. It has buttons on it, but it does not spoil our food and clothes. It does not carry diseases. कंप्यूटर का क्या होता है? कंप्यूटर का एक पार्ट है माउस, राइट? आपको पता है वो क्या होता है? एक जो एनिमल होता है माउस, पता है ना क्या? चूहा, राइट? वो जैसा ही होता है, बट दैट्स नॉट एक्चुअल चूहा. यहाँ पे लिखा है इट डज नॉट स्पॉइल आवर फूड एंड क्लोथ्स. ये जो कंप्यूटर का माउस है ये हमारे ना तो फूड को स्पॉइल करता है ना ही हमारे क्लोथ्स को काटता है, राइट? इट डज नॉट कैरी डिजीजेस. ये हमें कोई डिजीज भी कैरी नहीं करता है. ओके, बट इट लुक्स लाइक अ माउस. दैट्स व्हाई इसका नाम क्या है? माउस. वी विल राइट अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ माउस. ओके, mouse is an input device. Of a computer. It is used to point, click, and move things on the computer. And move things on the computer screen. हम माउस किस लिए यूज करते हैं? We use mouse to point, right? To click and to move things on the computer screen. ठीक है, जो भी आपके जो मॉनिटर है उसके स्क्रीन पे जितना भी आपको अंदर आपको उसको क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है, ठीक है, या फिर उसको पॉइंट करना है, किसके हेल्प से करेंगे आप? विद द हेल्प ऑफ माउस. Okay, so this is the simple definition of mouse. You can also note down it in your copy as well. Okay. A mouse has 3 buttons. आप सबने देखा होगा माउस, राइट? Let me draw mouse. यहाँ पे टेल होगा, ठीक है? सो इस टाइप का होता है माउस, राइट? माउस हैज 3 buttons. What are they? Left button, scroll button and right button. This is left button. This is right button. And क्या बोलते हैं? मिडल में एक बटन होता है, क्या बोलते हैं? Scroll wheel. क्या बोलते हैं उसको? Scroll wheel. If you have seen the mouse, आपको पता चलेगा वहाँ पे क्या है? एक छोटा सा बटन रहता है जिसको आप क्या कर सकते हैं? स्क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे रहता है उसका, यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे बटन रहता है, तो यू कैन स्क्रॉल इट फ्रॉम हियर, ठीक है? नाउ वी विल लर्न द यूजेस ऑफ लेफ्ट बटन, राइट बटन एंड द स्क्रॉल व्हील. ओके,
open things. Okay, जो माउस पे आपका लेफ्ट बटन होता है वो आप किस लिए यूज करते हो? You will use that button to select and open things. Okay, right button is used to see more options. और भी आपको और ऑप्शंस देखना है तो आप कौन सा बटन यूज करोगे? You will use right button. You will click on right button. Now scroll wheel. It is used to move the page up and down. Page up and down. ठीक है, जो स्क्रॉल बटन है आप उसको कब यूज करेंगे? जब आप स्क्रीन को ऊपर या नीचे करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने कंप्यूटर के मॉनिटर पे स्क्रीन पे आप कुछ पैराग्राफ पढ़ रहे हो. ठीक है, यू आर रीडिंग दैट पैराग्राफ. नाउ आपने पूरा जो भी स्क्रीन पे है वो पैराग्राफ आपने पढ़ लिया है. ओके, नाउ यू वांट टू मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ. तब आप क्या यूज करेंगे? यू विल यूज द स्क्रॉल व्हील. ठीक है, जब आप स्क्रॉल व्हील को स्क्रॉल करेंगे तब क्या होगा? जो वो पैराग्राफ है वो ऊपर चला जाएगा एंड जो नया है इसके नीचे वो क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा. वैसे ही इफ यू वांट टू गो from up to down, you will use scroll button. If you want to go from down to up, you will use scroll button. Okay, that will help you to move the page up and down. Example. Clear picture of mouse. Okay, so as you can see, this is a mouse. Okay, this is left button. Okay, and this is right button. ठीक है, यहाँ पे बीच पे आपको दिखाई दे रहा होगा. You can see here यहाँ पे छोटा सा क्या है? बटन टाइप का है, राइट? दिस इज द स्क्रॉल व्हील. क्या है ये? स्क्रॉल व्हील. ठीक है, ये है आपका स्क्रॉल व्हील. आप जब इसको स्क्रॉल करोगे तो क्या होगा? स्क्रीन जो है वो ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर आ सकता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज माउस पैड. क्या है? माउस पैड. दिस इज माउस पैड. To make the mouse work properly, you must place it on a mouse
mouse pad. माउस पैड किस तरह का दिखाई देता है? माउस पैड इज अ सॉफ्ट फ्लैट पैड. ठीक है, किस तरह का होता है माउस पैड? और भी तरह के होते हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउस पैड. ठीक है, जो क्या होता है, एक कपड़ा टाइप का होता है जो सॉफ्ट होता है, विच विल हेल्प अस टू यूज माउस मोर प्रॉपरली. ठीक है, जब हम माउस पैड के ऊपर रख के माउस को यूज करेंगे तब क्या होगा, तब हम माउस को स्मूथली चला सकते हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस. Okay, mouse pad is a soft flat pad. It is kept under the mouse to help the mouse move smoothly and work properly. ठीक है, ये माउस पैड के ऊपर हम क्या रखते हैं? माउस को रखते हैं. ठीक है, क्योंकि माउस के पैड पे अगर हम माउस रखेंगे तो क्या होगा, ये हमें माउस को मूव करने में, क्योंकि वी हैव टू मूव माउस राइट, इधर उधर वी हैव टू मूव दैट. तो ऐसे सिर्फ टेबल पे तो रख के नहीं यूज कर सकते. ठीक है, इसलिए क्या है, वी नीड माउस पैड टू यूज दैट माउस. ठीक है, विच विल हेल्प अस टू मूव द माउस स्मूथली एंड इट विल हेल्प द माउस टू वर्क प्रॉपरली. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द माउस पैड हम क्या कर सकते हैं, माउस को अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं. ओके, माउस पैड का क्या है, यू कैन आल्सो राइट द डेफिनेशन ऑफ माउस पैड. Now mouse pointer. Mouse pointer. You can also look into your book, page number 36. Mouse pointer is what the arrowhead seen on the monitor is called the pointer. ठीक है? For example, this is your monitor. Okay, ये आपका क्या है, monitor screen है ये आपका. यहाँ पे क्या होता है, एक छोटा सा इस टाइप का एरो होता है राइट. इस टाइप का क्या होता है, एरो होता है कंप्यूटर में राइट. ये क्या है, इसे क्या बोलते हैं हम, पॉइंटर. ओके, दिस इज कॉल्ड पॉइंटर. एंड व्हेनेवर यू यूज द माउस और यू मूव द माउस, तब क्या होगा, ये पॉइंटर भी मूव होगा. ठीक है, जब आप स्क्रॉल करेंगे तो ये पॉइंटर आपका क्या होगा, ऊपर चला जाएगा. ठीक है, जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये पॉइंटर कहाँ आएगा, नीचे से आएगा. ठीक है, व्हेन यू मूव दिस माउस लाइक दिस, तो क्या होगा, ये पॉइंटर भी स्क्रीन पे ऐसे मूव होगा. ठीक है, जैसे आप माउस को यूज करेंगे वैसे ही आपका ये पॉइंटर क्या होगा, स्क्रीन पे मूव होगा. ठीक है, वी कैन टेक द पॉइंटर टू एनी ऑब्जेक्ट ऑन द मॉनिटर. ये पॉइंटर को हम कहीं पे भी लेकर जाके क्लिक कर सकते, ओपन कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या है, एक फाइल है, यहाँ पे एक गेम है. ठीक है, सो यू वांट टू ओपन दैट गेम. क्या करना है आपको, यू हैव टू मूव दिस कर्सर हियर एंड यहाँ पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है. ठीक है, ये कर्सर को आप यहाँ पे लेकर जाएंगे एंड उसको आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे एंड देन गेम क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा. ठीक है, एंड मॉनिटर पे आपको व्हाइल देखिए, व्हाइल होल्डिंग द माउस विथ योर लेफ्ट हैंड, कीप द मिडल फिंगर ऑन द लेफ्ट बटन एंड द इंडेक्स फिंगर ऑन द राइट बटन. जब भी आप माउस को यूज करेंगे तो आपका क्या होगा, इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर, एक आपका इंडेक्स फिंगर लेफ्ट साइड में होगा एंड आपका मिडल फिंगर राइट साइड पे होगा. ठीक है, दिस इज हाउ यू होल्ड द माउस. ओके, you can write the definition of mouse pad. This was the picture. Mouse pad. Mouse pad is a soft flat. Soft flat. It is kept under. ये कहाँ पे रखता है, माउस के नीचे राइट. Is kept under the
mouse to help the mouse move smoothly and work properly. This is the simple definition of mouse pad. ठीक है, बुक पे दिया है बट बुक में क्या है आपका डेफिनेशन नहीं दिया है, जस्ट माउस पैड का क्या दिया है यूज, हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं वो दिया है. ठीक है, यू कैन ऑल्सो सी इन द बुक, आपको बुक में भी दिखाई दे रहा होगा माउस पैड जिसके नीचे माउस रखा हुआ है. राइट, आपको दिखाई दे रहा है ना इस टाइप का एक वहाँ पे. राइट, इसके ऊपर क्या है माउस, इसके ऊपर क्या रखा है माउस को रखा है. राइट, इसके ऊपर क्या है माउस को रखा हुआ है. नेक्स्ट वाज माउस पॉइंटर. राइट, नेक्स्ट वाज माउस पॉइंटर. Mouse pointer is the arrow head seen on the monitor. When you move the mouse, the pointer also moves. Right? When you move the mouse, the pointer also move and helps us to point and select things. This is your screen. ठीक है, मॉनिटर की स्क्रीन है एंड ये क्या है आपका, दिस इज योर पॉइंटर. ठीक है, इस टाइप का होगा. Whenever you move mouse, ये भी क्या होगा मूव होगा. ठीक है, ये भी क्या होगा मूव होगा. एंड द पॉइंटर ऑल्सो मूव्स एंड हेल्प अस टू पॉइंट एंड सेलेक्ट थिंग्स. ठीक है, ये पॉइंटर क्या करेगा हमको, हमें कुछ कोई भी चीज को सेलेक्ट करने में क्या करेगा हेल्प करेगा. ठीक है, तो जैसे आप माउस को मूव करेंगे वैसे ही ये पॉइंटर भी क्या होगा मूव होगा. अगर आप माउस को ऊपर लेकर जाएंगे तो पॉइंटर क्या होगा ये ऊपर चला जाएगा. नीचे लेकर आएंगे माउस को ऐसे तो नीचे आ जाएगा. ठीक है, बट अगर आपको पेज को स्क्रॉल करना है, ऊपर से नीचे लेकर जाना है, मूव करना है, तो यू हैव टू यूज दिस स्क्रॉल व्हील. ठीक है, जो माउस के बीच पे मिडल पे होते हैं वो आपको यूज करना है. एंड व्हेन यू हैव टू सेलेक्ट थिंग्स, तब आपको क्या करना है माउस के हेल्प से आपको वो पॉइंटर को मूव करके लेकर जाना है. ठीक है, अभी यहाँ पे एक फाइल है, यहाँ पे एक गेम है. ठीक है, नाउ यू वांट टू ओपन दैट फाइल. आपको क्या करना है वो फाइल खोलना है. ओपन करना तो क्या करेंगे आप, विद द हेल्प ऑफ माउस आप ये पॉइंटर को कहाँ लेकर जाएंगे, यहाँ पे लेकर जाएंगे. यहाँ पे जो फाइल है इसके पास लेकर जाएंगे एंड देन विद द हेल्प ऑफ द लेफ्ट बटन यू विल क्लिक, यू विल सेलेक्ट. ठीक है, अब जब इसको सेलेक्ट करेंगे तब क्या होगा ये ओपन हो जाएगा. ठीक है, ये है आपका क्या है यूजेस ऑफ माउस. इस तरह से आप माउस को यूज कर सकते हैं. ठीक है, okay, so this is all for today's class. We will continue tomorrow. Okay, so get ready for your next class, for your math class. Take out your math book and copy and get ready for your math class. I hope you all have understood well about the mouse. Okay, when the offline classes will again resume, I will show you in the lab.
ठीक है, माउस को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे दिखा, माउस पैड कैसे होते हैं, वो सब हम आपको कब दिखाएंगे, जब आपका ऑफलाइन क्लास फिर से स्टार्ट होगा, तब लैब पे लेकर जाएंगे एंड तब दिखाएंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। Good afternoon, dear students. Now get ready for the math class. So on last class we were doing skip counting, right? So we will revise the term skip counting today once again. So today we are studying skip counting. So this we did in our last class also. We will revise it a bit on today also. So what was the definition of skip counting? Skip counting means counting numbers certain numbers in between. So we learned about this definition in our last class also. Let us revise it once again. What is skip counting? Skip counting means counting numbers by skipping certain numbers in between. When we don't count numbers serially, like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, these are all in numerical order, right? These numbers are in numerical order. But skip counting means skipping certain numbers in between any of the numbers. Skip counting means counting numbers by skipping certain numbers in between. This is the definition. So in last class, what we did was, with the help of a number line, we try to understand the skip counting by we did by 2s and 3s we did it on last class, right? So let us revise it once again. So this is what I told you. The thing which I have drawn over here is called number line, right? So we try to learn skip counting with the help of these number line. So from 0 to 10 I have drawn a number line, I have written number. So if we have to skip count by 2s, how will we do that? From here we have to skip 2 numbers. So we will skip 1 and 2. The first was 0 and we moved on to number 2, right? So from 2 again we have to skip count 2 times, 1 and 2. We reached 2.4, right? Again from 4 we have to skip count 2 times, 1 and 2. 6, 1 and 2. 8 and then 1 and 2, 10. So we did the skip count by 2 digits, right? So from 0 to 2, from 4 to 6 and 8 to 10. We've written the number over here, right? But we skipped certain numbers in between. That was 1, 3, 5, 7 and 9, right? We did not move serially from 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, but we skipped certain numbers in between. So these skipping of numbers are termed as skip counting.
with the help of a number line. So today we are going to do skip count by 5s. We will do it by 5s. Okay, so for that what will we have to do? First thing we have to do is we draw a number line. First what will we do? We will draw a number line and then we will write certain numbers in between. Right? So we have drawn a number line. We will write numbers below it. So let us write till 15 only. So here we are going to skip count by 5. So let us do it. From 0 we will count 1, 2, 3, 4 and 5. Right? So we reached on number 5. So we will write 5 over here. And again we have to skip count by 5. So we will move 5 steps forward. 1, 2, 3, 4 and 5. Now where did we reach? On number 10. So we will write number 10 over here. Again 5 digits further. 1, 2, 3, 4 and 5. Right? So we landed on number 15. We will write 15 over here. So if you write more numbers over here, 16, 17, 18, 19 and 20. So if we are to again skip count 5 times, we will go from 15 to 1, 2, 3, 4 and 5. Right? So we reach on number 20. Right? But here too we skip certain numbers in between. ये बीच वाली जो नंबर है ये सबको हमने स्किप किया, राइट? ये येलो लाइन से जितना भी नंबर्स मैंने मार्क किया है ये सब नंबर्स को हमने स्किप किया है. So this skipping of number is what is termed as skip counting. All right. So this is how skip counting is done with the help of a number line. If you add it also 5, 6, 7, 8, 9, 10. So gap कितना है? 5 का gap है. 10 to 15 में कितना नंबर का gap है? 5. From 15 to 20 the gap is of 5. Here too we did the skip count by 5. So the gap was 5 times. Alright. So now let us do some exercises. So we will do skip count by 2s. Alright, so let us do. So we have to do this together. So answer the question in the comment box. आप सब इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए. Mention your name and class section also. So what comes after 2? If you know the answer, leave it in the comment box. I will check it. If you are paying attentive to the class, comment the answer in the comment section. So after 2, we will write 4 because 2 के बाद 2 numbers का gap में which number is present? 3 and 4. So we will write 4. After 4 the number is 6. Right? 4, 5 and 6. 6 after 6? 8. After 8? 10. And here 12. So on each of the numbers there are the gapping of 2 numbers. So this is how skip count of 2 is done. Right? So let us do it with
5 now. 5. Alright. 5. So, what will be the number over here? It will be 10. We are skip counting it by 5 times. So let's make it clear here also. We did it like this, right? This is the number line. So we did skip counting with the help of a number line. Wow, how did we got this 10 over here? Let me make it clear with this number line. We skipped count by 5. So 1, 2, 3, 4, 5. First is number 5. And on the blank, how did we got this 10? 1, 2, 3, 4, 5. By moving on to the next number, by skip counting 5 times, we got this 10. So we have written 10 over here. The next blank is, what will we write over here? 10. Let me write the numbers below. So, when we move 5 steps forward from 10, we will land on number 15, right? So, here we have 15. 5, 10, 15, and here 20, 25, and last one will be 30. Right? So here is gapping of 5 numbers because we are skip counting by 5. So we will do this in this manner. Now we will do it by 10. Skip counting by 10. So let me write the question. What will be over here? After 10, what number comes? When we are doing skip count by 10, it is 20, and then 30, 40, 50, and 60. This is the skip counting by 10. So each number's gapping is 10. Gapping is 10 times. So this is the counting by 10. Alright. So this is how we are going to fill in the blanks. So let me do a quick revision of today. So first what we did, we tried to understand the skip counting with the help of a definition. So what was the definition of skip counting? Skip counting means counting numbers, keeping certain numbers in between. When we skip certain numbers in between and we do not move in a numerical order, that is what skip counting is. So after that, we tried to solve the skip counting by 2's. So we drew a number line, we placed numbers over here, and how did we got these numbers? With the help of the number line, we skipped or we moved 2 steps forward. First was 0, and we moved 2 steps forward, we landed on 2, then 4, then 6, then 8, and then 10. By skipping 2 numbers, we got these, right? So these skipping of numbers, the numbers which we have skipped over here are underlined by yellow lines. 0, it is circled by blue.
So the number which we have skipped is 1, 3, 5, 7, 9. So these are the skip counting we did by 2s. And after that we did by 5s. So here too we draw a number line. We wrote the numbers and we skipped count by 5. So we got 5, 10, 15 and 20. How did we got this? We moved 5 steps on number 9. And lastly, we did it by tens. So first we got was 10, 20, 30, 40, 50, 50 and 60. So this is how skip counting is done with the help of number line. So the number line will make us understand the concept more clearly. Alright, so this is all. To next topic from next class. So now get ready for your other classes. गुड आफ्टरनून बच्चों। तो स्वागत है आपका सब्जेक्ट हिंदी क्लासरूम। ठीक है, तो चलिए आज हम मात्रा की यात्रा करते हैं। मात्रा की यात्रा मतलब व्यंजन मात्रा। आप लोग ने तो बहुत सारी मात्राएं पढ़ी हैं, लेकिन आज हम आपको उसमें से मात्रा देते पे आप लोग को ध्यान देना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, एक साइड हम व्यंजन लिखेंगे, ठीक है, और एक साइड हम मात्रा लिखेंगे। वो व्यंजन और मात्रा को जोड़कर हमें एक शब्द बनाना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे व्यंजन लिखा हुआ है र और यहाँ पे मात्रा है। ठीक है, और हमें रा से क्या होगा, तो रा से शब्द बन जाएगा राम। ठीक है, व्यंजन जोड़ छोटी की मात्रा सी, सी से क्या हो जाएगा सी। ठीक है, चार से शब्द बन जाएगा चार, जिसको हम इंग्लिश में स्टीम बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, चाम बोलते हैं।
देखिए इधर जो व्यंजन है द है और यहाँ पे बड़ी की मात्रा है दी, तो दी से क्या बन जाएगा दीदी। देखिए यहाँ जो व्यंजन लिया हुआ है सौ है, सौ में छोटी ऊ की मात्रा जोड़ना है, ठीक है। तो सौ में छोटी ऊ की मात्रा जोड़ेंगे तो सू से सौ बनाएंगे सू। देखिए इधर जो व्यंजन है रॉ है, रॉ में बड़ी की मात्रा जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा रूप, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प में एक की मात्रा पे, ठीक है। जब हम पे से शब्द जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा पे, ठीक है। पॉज क्या है व्यंजन है और प्लस एक की मात्रा, व्यंजन की मात्रा जोड़ेंगे पे, पे से क्या आ जाएगा पे, ठीक है। जब देखिए व्यंजन में जब मात्रा जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा कै हो जाएगा, तो कै से सब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा कैसा, ठीक है। आप लोग अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं चेक करती हूँ किसका सही है किसका गलत है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में तो से आप क्या बनाइए, तो से शब्द जो होगा वो तो से कौन सा शब्द होगा, ठीक है। जैसे देखिए तो व्यंजन है और तो प्लस तो में जोड़ेंगे तो में ओ की मात्रा, ठीक है। तो से कौन सा शब्द बनेगा, तो देखिए आप लोग अपना अपना कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दीजिए, ठीक है। तो से हो जाएगा तोता, ठीक है। तो से क्या हो जाएगा तोता हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 100 व्यंजन, ठीक है, और उसमें मात्रा जोड़ना है और, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 100, 100 से क्या हो जाएगा, अब 100 से 100 कौन सा शब्द हम बनाएंगे, देखिए हम इसमें 3 अक्षर का भी शब्द बना सकते हैं, 4 अक्षर का भी, लेकिन हम आपको छोटा अक्षर से बता रहे हैं, 2 अक्षर के शब्द से ही बताते हैं, क्योंकि जितना छोटा शब्द समझेंगे अगर हमको छोटा समझ में आ जाएगा तो हम उससे खुद बड़ा बना सकते हैं, ठीक है।
पढ़ने का बहुत शौक होता है, देखिए उसको क्या होता है ना कि देखिए 2-3 अभी हम लोग बात करते हैं, लेकिन जो पढ़ने वाला बच्चा होता है ना वो बैठ के अपना कहीं भी जाएगा शाम में बैठ के अपना पढ़ाई करेगा, ठीक है। किसी को पढ़ने का शौक होता है, किसी को गीत गाने का शौक होता है, किसी का डांस का शौक होता है, वो उसको ज़्यादा मतलब पढ़ने से ज़्यादा उसको डांस का शौक होता है, किसी को हर किसी का अपना अपना शौक होता है, ठीक है। भंग से कौन सा शब्द बनाएंगे, ठीक है। भंग से हो जाएगा शब्द भंग। भंग का मतलब होता है कोई, देखिए कोई चीज आदमी करता है तो उसको नष्ट करना, उसको भंग बोलते हैं, ठीक है। भंग का मतलब होता है नष्ट करना, ठीक है। अब देखिए, अब आप लोग देखिए व्यंजन में मात्रा जोड़कर शब्द बनाइए, ठीक है। तो र क्या है, हमारा व्यंजन है, तो र में जब हम आठ, इसको क्या कौन सा मात्रा बोलते हैं, आठ की मात्रा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, र को जब मात्रा से जोड़ेंगे यहाँ पे रा हो गया, तो रा से शब्द हम क्या बनाए, राम, क्या कौन सा शब्द बना, राम बना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स जो हमारा व्यंजन है और ये क्या है, छोटी की मात्रा है, जब व्यंजन को मात्रा से जोड़ेंगे तो सी से क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए च व्यंजन है, ठीक है, और उसमें जब हम आ की मात्रा जोड़े हैं तो क्या हो गया है, चार, तो चार से क्या हो गया, चार, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ड व्यंजन है और यहाँ पे कौन सी ये कौन सी मात्रा, आप बताइए कमेंट बॉक्स में, ये जो मात्रा दिया गया है कौन सी मात्रा बोलते हैं इसको, ठीक है, इसको बोलते हैं बड़ी की मात्रा। तो ये हो गया डी, जब व्यंजन में मात्रा को जोड़े तो ये डी हो गया, तो डी से क्या हो गया, डी। अब यहाँ पे देखिए स में जो हम छोटी की मात्रा को पता है ना, छोटी की मात्रा नीचे से गोल होता है, ठीक है। तो ये क्या है, नीचे से गोल है, तो स में जब छोटी की मात्रा लगाए हैं तो सु से क्या हो गया, सु से हम शब्द क्या बनाए, सुर का मतलब है ना, तो जो बहुत सुर से कोई क्या गाना जो गाते हैं उसको सुर बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब चलिए व्यंजन हो गया। चलिए अब देखिए, अब व्यंजन र है, र में हम क्या किए हैं, बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा शुरू हो गया। अब देखिए यहाँ पे र व्यंजन है, ठीक है, र व्यंजन में छोटी की मात्रा रू, तो रू से क्या करेंगे, रू से अगर हम शब्द बनाते हैं तो क्या होता है, रू, ठीक है, जिसको इंग्लिश में स्टॉप बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प व्यंजन है, प व्यंजन को किस चीज की मात्रा जोड़ना है, ए की मात्रा जोड़ना है, तो जब हम प में ए की मात्रा को जोड़ेंगे तो जाएगा पेड़, तो पेड़ से एक शब्द बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, पेड़, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प व्यंजन है, तो प व्यंजन में हमको कौन सी मात्रा जोड़ना है, ए की मात्रा जोड़ना है, तो यहाँ पे देखिए जब प व्यंजन में ए की मात्रा जोड़े हैं तो क्या हो गया, कै। अब कै से हमको एक शब्द बनाना है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, कैसा। अब देखिए त व्यंजन है और त व्यंजन में कौन सी मात्रा जोड़ना है, ओ की मात्रा जोड़ना है, ठीक है। ओ की मात्रा एक लाइन नीचे और एक लाइन ऊपर, ठीक है। तो त में जब ओ की मात्रा जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, तो से हम क्या करेंगे, तो से सब बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, तोता हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स है, स में जब औ की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सौ से क्या हो जाएगा, 100, ठीक है। अब देखिए लास्ट में क्या है, भ में अन की मात्रा जोड़ना है, जब भ में अन की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वन, और इससे एक नया शब्द बनाना है, जैसे कि देखिए भ में भंग और ग, क्या हो गया, भंग, ठीक है। तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। और देखिए ये रहा मात्रा की यात्रा। मात्रा की यात्रा इसलिए बोले कि मात्रा की सफर कराते हैं, क्योंकि देखिए इसमें आ की भी मात्रा हम लोग ने, आ की मात्रा का भी सफर किया हम लोग, छोटी ऊ की मात्रा भी, बड़ी ई की मात्रा भी,
अम की मात्रा दी, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। एक बार में हम लोग बहुत सारी मात्रा की क्या किए, सैर किए, अब इसलिए मात्रा की यात्रा होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग जब लिखते हैं हिंदी में, इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं वर्ड, ठीक है, और हिंदी में हम लोग उसी को अगर हमसे कोई बोल दे कि 1 से लेकर 10 तक गिनती लिखकर दिखाइए, ठीक है, तो 1 से 10 तक तो गिनती ऐसे आप लोग क्लास वर्क में बहुत बार करवाया गया है, लेकिन चलिए हम आपको एक बार बताते हैं। एक, ठीक है, आप इसको अपने कॉपी में लिख सकते हैं और फिर हम मिलते हैं कल एक अच्छे से विषय के साथ। फिर आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और हम नेक्स्ट टीचर को बुलाते हैं जो कि आपको SST पढ़ाएंगे। टू टेक आउट, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, देखिए 1 से 10 तक गिन के लिखिए, ठीक है ना, यहाँ पे लिखिए एक, कोई भी आपको बोल सकता है कि 1 से 10 तक गिनती लिखिए, ठीक है, इसके लिए तो हमें आना चाहिए ना हिंदी में। इसको होमवर्क इसको एक बार लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बार अपने कंपाउंड भी बता देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ठीक है, तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले अच्छे विषय के साथ। Good morning, students. So, first I will erase this one, okay? Okay, so good morning, students. So, as we know that I am your SST teacher. So, everyone please take out your SST book and open the chapter 14, page number 130. So, everyone please open the page number 130. So students, today we will start new chapter, chapter 14, and chapter name is the earth and the sky.
put your SST book and open the page number 113. Okay. So today we will start new chapter, and our chapter name is the earth and the sky. Sorry, and the sky. Okay. Wait. Okay. Okay. So students, in this chapter, we are going to learn about so many different subtopics, and first one is day and night. Second one is our planet. Earth and its different landforms and third one is the sun, moon, star and clouds. So see students, so from today we will start new chapter, chapter 14, and chapter name is the earth and the sky. So in this chapter we are going to learn about day and night. Second subtopic is our planet earth and its different landform. Okay, and third one is the sun, moon, star and cloud. So before we will discuss about this subtopic, we can learn one warm-up rhymes. Okay, so everyone please repeat after me. Okay, at your home only. So okay, so let's start. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you have up above the world so high, like a diamond in the sky. Okay, student. So this is rhymes for you. Okay. Plus. So, okay students, I have a question for you. Can you name some other things we can see in the sky? So, I will repeat my question. क्या आप कुछ दूसरा चीज का नाम ले सकते हैं जो हम लोग स्काई में at day time otherwise night time देखते हैं? Please, those who are know the answer, please आप लोग comment कर सकते हैं. Okay.
ओके स्टूडेंट्स, आपका कमेंट आ रहा है, मैम लिखना भी है। सो आप लोग कमेंट में लिख के आप लोग शेयर कर सकते हो नोट्स। कॉपी नहीं बोल रहे। Okay, in your copy you can say, okay, everyone, no need to note down in your copy, okay, I will give you homework, that one you have to note down. First you can try to understand what I will teach you, okay. आप लोगों को मैं क्या पढ़ाना चाहती हूँ पहले लर्न कीजिए। फर्स्ट यू कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक क्लियरली, देन यू हैव टू राइट, अदरवाइज आई विल से आइदर यू कैन नोट डाउन और नॉट। ओके स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को बोलूँगी। सो आज हम लोग का फर्स्ट सब टॉपिक है द स्काई। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट दिस स्काई। As I asked you the question that can you name some things which you can see the sky either daytime or night time? कोई भी ऐसा चीज का नाम बोलिए जो हम लोग स्काई में देखते हैं डे टाइम चाहे नाइट टाइम। सो योर आंसर इज सन, स्टार, मून एंड क्लाउड्स। एज डे टाइम हम लोग क्या देखते हैं, आप लोग देखिए, डे टाइम हम लोग देखते हैं फर्स्ट इज सन, ओके, एंड सेकंड वन इज क्लाउड, ओके, एंड नाइट टाइम we can say stars, and second one is the moon, okay. So this is the things which we can see in the sky at daytime and night time. So दिन का समय हम लोग सन और क्लाउड्स देखते हैं और नाइट टाइम हम लोग क्या देखते हैं, स्टार एंड मून। एंड सेकंड थिंग इज दैट एज वी नो दैट the sky is look very bright at daytime and the sky is look dark at night time. It means that कि डे टाइम में स्काई कैसा दिखता है, डे टाइम में स्काई बहुत ब्राइट इन कलर दिखता है, ओके, एंड नाइट टाइम में स्काई क्या दिखता है, डार्क इन कलर। सो फर्स्ट आई विल रीड हियर, ओके. So I already asked you the question, okay. So I have one more question and that question is that what is sky, okay. So मैं आप लोग को पहले बताना चाहती हूँ कि स्काई क्या है। So please if anyone know the answer please comment me, शेयर कर सकते हैं आप लोग आंसर कि स्काई का मतलब क्या होता है। ओके, क्वेश्चन व्हाट इज स्काई। सो अभी हम लोग सब टॉपिक डिस्कस कर रहे थे कि स्काई के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट वी हैव अंडरस्टैंड व्हाट इज स्काई, स्काई क्या है। सो आंसर एज ऑलरेडी गिवन इन अ फर्स्ट लाइन ओनली। आंसर आप लोग को फर्स्ट लाइन में ही दिया गया है। जो भी कॉपी आप लोग मीन्स बुक ओपन किए हैं दे ऑलरेडी नोज द आंसर, ओके. If you do not the answer, I will write the answer there. So answer is answer is students, the vast open space is called sky. जो भी हम लोग स्काई देखते हैं, आसमान देखते हैं, बड़ा सा स्पेस जो दिखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्काई, ओके. एंड द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू इन कलर एंड समटाइम व्हाट हैपन व्हेन वी कैन सी द स्काई, sky looks blue in color and sometimes what happen कि clouds भी होता है, that time we can see the इतना मतलब clouds also we can see in the sky and clouds mean we can see the clouds at daytime, okay students.
Now please put your fingers on your book. I will read the paragraph. Continue. Okay. We can see the sun, the moon, the star, and the cloud in the sky. The sky in the day looks different than the sky at night. So यहाँ पर और क्वेश्चन अराइज हो रहा है. The day looks different in the daytime as well as the day looks different in the night time. It means that दिन का समय जो डेज होता है वो डिफरेंट दिखता है एंड नाइट का समय जो डे होते हैं जो स्काई होता है वो डिफरेंट दिखता है. सो सिंपली आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट स्टूडेंट्स at daytime sky look bright in color, whereas night time the sky look dark in color. Okay student, so as हम लोग okay, so your question is that ma'am please explain the sky. Okay, so sky क्या है? So sky when you can see the sky, जब आप लोग आसमान को ऐसे आप लोग हेड अप करके देखते हो तो you can see the big space, बड़ा सा स्पेस खाली देखते हो, उसी को बोलते हैं स्काई. एंड यही है the vast open space is called sky. This means जो बड़ा सा स्पेस आप लोग देखते हो आसमान में उसी को क्या बोलते हैं स्काई. ओके, एंड व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई? स्काई का कलर क्या है? ब्लू कलर. अदरवाइज हम लोग स्काई में क्या देखते हैं? क्लाउड्स भी देखते हैं. और रिलेटेड टू स्काई का क्वेश्चन क्या है कि डे टाइम में स्काई कैसा दिखता है? सो इन डे टाइम द स्काई लुक ब्राइट इन कलर. ओके, डे टाइम में स्काई कैसा दिखता है? ब्राइट कलर दिखता है. जब सन राइजेस होता है इट्स ऑटोमेटिकली लुक वेरी ब्राइट इन कलर. एंड व्हेयरएज नाइट टाइम में कैसा दिखता है? द स्काई लुक डार्क इन कलर. एंड नाइट टाइम में हम लोग क्या देखते हैं स्काई में? स्टार्स एंड मून. ओके, एंड डे टाइम में क्या देखते हैं? सन एंड क्लाउड्स. सो इफ एनीवन हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं सो डैट कि मैं आप लोग और क्लियर कर सकूं. So I hope you all understand what is sky. No need to write. Okay, Ayush. No need to write. You just try to understand. Later on, I will give you the word. Okay. If you will not understand, please tell me so that I will clear you. Yes, students, network issue हो रहा है. Okay.
You will understand. Okay. Okay. So I will. Now let's see what differences between how the days look at daytime and night time. Okay. Day sky and night sky. So okay, so now we can differentiate between how the day looks how the sky looks at daytime and how the day looks at night time. Okay, so ये आप लोगों को मैं HW दे रही हूँ. So this is your HW. Okay, you can make a column like that. आप लोग इसको column बनाइए ऐसे. Okay, see. Wait, okay, wait. You can make a column. Write three things you can see: day sky and night sky. Okay, so students, take out your copy, okay, students, and note down the homework for today. Wait. Right here. Take out your copy, students. Okay, so your question is write three things you see in day. Go touch your face. Okay, write three things you see in day.
day, sky, and three things which you can see in the night sky. Three things that you can that you can see in night sky. Okay. So you have to make one column. Okay, students. आप लोग क्या? This is your homework. Your homework is that your homework is here. Write three things you see in the day sky, and write three things that you can see in the night sky. तीन चीज का नाम लिखना है जो आप लोग डे में देखते हैं. अदरवाइज तीन चीज का नाम लिखना है जो आप लोग नाइट में देखते हैं. अदरवाइज आप लोग को जितना पड़ता है आप लोग देखो. If those who know the answer, please you have to complete your homework. If don't know, I will give you the answer. Okay, tomorrow I will take. You have to make a column like that. आप लोग को column कैसे बनाना है students देख लीजिए. ऐसे आप लोग को column एक form करना है. See. Day sky. Night sky. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So this is your homework for today. Thank you and have a nice day. Tomorrow I will continue my classes. Okay, thank you students. Good afternoon everyone. So this is your English class. All of you will be studying English as well as with your copy also. Okay. So today we are going to learn from grammar. Okay. Okay. Take out your grammar. Okay. Today we are going to start a new chapter, okay? That is chapter 10. Chapter 10, okay? The name of the chapter is Doing Words. What? Doing Words. Okay? Doing Words. So, yes, I use good afternoon. Good afternoon, Jayas. Doing words. So, doing words को हम दूसरे वर्ड से भी जाना जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में, हमारे इंग्लिश में. ओके, दैट इज वर्ब. दैट इज वर्ब. ओके, वर्ब. अंडरस्टैंड? वो क्या है? वर्ब है. वो क्या है? वर्ब. अंडरस्टैंड? वर्ब का मतलब होता है क्रिया. वर्ब का मतलब होता है कि क्रिया. हिंदी में हम क्या बोलेंगे? क्रिया. ओके, हिंदी में हम बोलेंगे वर्ब को क्रिया.
वर्क यानी कि काम। किसका काम? किसका काम? काम कौन करते हैं? काम कौन करते हैं? हाँ? काम कौन करते हैं? इंसान ना, इंसान करते हैं, जानवर जानवर भी काम करते हैं, सब काम करते हैं। ओके, इंसान भी काम करते हैं, जानवर भी काम करते हैं, राइट? जैसे कि मैं आई एम अ टीचर, ओके, आई एम इंग्लिश टीचर, सो मैं क्या कर रही हूँ? आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। आज हम न्यू वर्ड्स के बारे में तो मैं तुम लोग को पढ़ा रही हूँ एंड यू आर स्टूडेंट्स, ओके। सो आप लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, टीचर से पढ़ रहे हैं। आप लोग का भी काम है, ठीक है, आप लोग भी पढ़ने का काम कर रहे हैं। मैं पढ़ाने का काम कर रही हूँ, आप लोग भी पढ़ने का काम कर रहे हैं। जैसे कि बाहर यदि हम बाहर जाएंगे तो जैसे कि वहाँ पे काव देखा हमने, ओके, गाय देखा, तो गाय क्या काम कर रहे हैं? गाय वहाँ पे चलने का काम कर रहे हैं, ओके, गाय यानी कि खाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी, चाहे एनिमल्स हो, चाहे पीपल्स हो, चाहे ह्यूमंस हो, है ना, सब लोग क्या करते हैं? काम करते हैं, ठीक है, काम करते हैं, ओके। तो हम लोग भी जो काम करते हैं, इंसान, जानवर, एनिमल, पीपल, ओके, ये उसका जो काम है, उसका वर्क को क्या बोलेंगे हम? वर्क, क्रिया, ओके, काम यानी कि डूइंग वर्क्स, अंडरस्टैंड? ये होता है हमारे डूइंग वर्क्स, ओके। डूइंग वर्क्स का हमारे जो है डूइंग वर्ड्स का डेफिनेशन क्या है? कि वर्ड words that tell us about an action being done। इतना लंबा चौड़ा क्या है? आंसर, ओके, आंसर है। बट इसको हमने अभी सिंप्लीफिकेशन में हमने क्या पढ़ा कि डूइंग वर्ड्स क्या होता है? क्या होता है? काम होता है, वर्क होता है, ओके। बाय एन एनिमल, अ पर्सन और अ थिंग are called doing words, ओके। अब देखिए, ओके, अभी मैंने क्या बताया कि काम होता है, सिंपली डूइंग वर्ड्स क्या होता है? काम, क्रिया, किसी का काम जो काम कर रहे हैं वो होता है, ठीक है। अब देखिए उसी को फिर यहाँ सेंटेंस में लिखा है, words that tell us about an actions, okay, पेज नंबर 50 निकालिए, ग्रामर का पेज नंबर 50, okay। words that tell us about an action, एक्शन का मतलब होता है कि कुछ करना, ठीक है। वर्ड, जो भी वर्ड से, ठीक है, वर्ड से वहां पे वो वर्ड क्या बताते हैं? एक्शन को बताते हैं, ओके, यानी काम को बताते हैं, ठीक है। लेकिन किसके एक्शन के? किसके काम के? एक्शन बीइंग डन बाय, और कौन करते हुए एक्शन को काम? एनिमल, पशु, मैंने अभी बोला था ना, एनिमल, पर्सन, एक इंसान, या फिर थिंग, और अ थिंग, एक चीज भी काम करता है, जैसे कि फैन एक थिंग है कि नहीं है? लेकिन फैन का भी तो काम है। फैन क्या करते हैं? घूमते रहते हैं ना, वो हवा देते हैं ना, उसका भी तो काम है। थिंग का भी काम होता है, पर्सन का भी काम है, और एनिमल का भी काम। जो वो लोग काम करते हैं उसी को बोला जाता है वर्ड, हमारे डूइंग वर्ड्स, ओके। डूइंग वर्ड्स यानी कि वर्क, ओके। जैसे कि वर्ड, जैसे कि बात, भोगना, ईट, खाना, ओके, रन, दौड़ना, फ्लाई, उड़ना, टीच, पढ़ाना, सिट, बैठना, ओके, स्लीप, सोना, ओके, ईट, खाना, राइट, लिखना, लर्न, पढ़ना, ओके। ये सब कुछ क्या है? सब कुछ क्या है? काम है, वर्क है, ओके। वर्क जो कौन करते हैं? पीपल, ओके, इंसान, एनिमल, also thing, okay। So these words are called our action words, okay। action words, doing words, okay, action words, doing words, verb, ये तीनों एक ही है। action word भी वही है, doing words भी वही है, and verb भी वही है। action word तो पढ़ा है ना क्लास में, क्लास जूनियर सेक्शन में पढ़ा होगा,
कि नर्सरी यूकेजी में पढ़ा होगा कि एक्शन वर्ड क्या होता है, राइट। क्लास 1 में भी पढ़ाया है एक्शन वर्ड क्या होता है, जो भी काम को दिखाते हैं, जो भी वर्ड्स, इन वर्ड से जो काम करने का, जैसे कि ईट का मतलब होता है खाना। अब खाना कौन खाते हैं, इंसान खाते हैं, राइट। ये वर्ड जो है ये क्या है, हमारे एक्शन वर्ड। जितने भी एक्शन वर्ड्स हैं वो है हमारे डूइंग वर्ड्स, और वही हमारे क्या है कि वर्ब यानी कि क्रिया। सर okay, so these words are what doing words. Look. समझ में आया definitions of action words और the doing words और the verb? समझ में आया सबको? पेज नंबर 50 है बेटा, ग्रामर बुक पेज नंबर 50। Give me the other action words. Write in comment below. और action words बताइए मुझे, doing words बताइए। कौन बात कर रहे हैं आप लोग देख रहे हो, ओके। जिसका यहाँ पे जो नाम है ना मैं नोट डाउन कर रही हूँ, ठीक है। नोट डाउन कर लिया था, उसको पनिशमेंट मिलेगा, ओके। सो ज़्यादा बात नहीं करना है, एकदम पढ़ाई में फोकस करना है। जैसे तो लिख के बताइए तो गुड, वेरी गुड, रन, वेरी गुड। और दूसरा एक्शन वर्ड क्या बताइए मुझे, दूसरा एक्शन वर्ड बताइए। डूइंग वर्ड्स, काम करने वाला शब्द कौन है बताइए मुझे। बताइए प्लेइंग गुड, और बताइए फटाफट बताइए, ओके। उसके बाद हम एक्सरसाइज करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक्सरसाइज करने वाले हैं, जल्दी बताइए मुझे। प्लेइंग यस, प्लेइंग आल्सो गुड। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट। Fly, good. Okay. Running, good. Bad, good. Very good. यहाँ पे बस 2 ही स्टूडेंट है, तो और कहाँ चले गए? हाँ, running, good. Reading, good. Very good. और देखिए, read, also good. पढ़ना, read का मतलब होता है पढ़ना, राइट। जैसे कि देखिए फर्स्ट पिक्चर में देखिए वहाँ पे जो बर्ड्स है, ओके, बर्ड्स क्या कर रहे हैं, बर्ड्स वे फ्लाइंग इन द स्काई, राइट। वहाँ पे फ्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट इमेज में देखिए द गर्ल इज ईटिंग आई थिंक इट इज फ्रूट, ओके, ईटिंग अ फ्रूट, ओके, फ्रूट खा रहे हैं गर्ल, ओके। नेक्स्ट वन बॉय इज रनिंग, राइट, बॉय क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। नेक्स्ट वन डॉग इज बार्किंग, ओके, डॉग क्या कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, ओके। तो इन सब का क्या है, इन सब का काम है, ओके, इन सब का वॉक है। तो यही होता है हमारे जो वर्ड्स क्या बताते हैं, जो काम, जितने भी वर्ड्स है, वर्ड जैसे कि फ्लाई, वर्ड्स जो है, ओके, जितने भी वर्ड्स
Okay, let's move to the next one. Okay, I hope that सबको समझ में आ गया हो, कोई भी दिक्कत की जरूरत नहीं पड़ेगा. Now all of you open the page number 51. Okay, page number 51. अब मैं क्वेश्चन लिखूंगी. You have to give the answer in comment below. Okay. फटाफट you have to write the answer. Okay. अब मैं आपको क्वेश्चन लिखूंगी. अब फटाफट आंसर लिखना है. चित्र
exercise C, choose the correct answer. Okay. Good afternoon, Jayash. Okay, we will start our exercise. Okay. Okay. Now, okay. If you are writing in your copy, just mention like this. Okay. कॉपी में लिख रहे हो तो ऐसे करो या फिर बुक में आपको ऐसे ही टिक कर सकते हो. Okay. Okay. Now first अब क्या है क्वेश्चन? Our house. How many times? How many times in a day? How many times in a day should we brush our teeth? है ना? तो क्वेश्चन ये है, should we brush our teeth? है ना? दिन में कितनी बार हमें अपने टीथ को ब्रश करना है? ऑप्शन दिया है 1, 2 and 3. है ना? ऐसे ऑप्शन दिया है तो योर आंसर विल बी 2. Very good. Whoever wrote the answer, okay. Jayesh, very good. The answer will be 2. We should brush our teeth 2 times a day या फिर twice बोलते हैं ना, तो we should brush our teeth 2 times a day. Okay. And number 2, we can clean our hands with, we can clean our hands with, okay, हम अपने हाथ किसमें धो सकते हैं? किसके साथ धो सकते हैं? ऑप्शन है soap. Option B is sanitizer. और ऑप्शन C both A and B. Okay. तो हमारा आंसर क्या होगा? Yes, you can write in your copy. Okay, Jayesh, you can write in your copy. तो 2 का आंसर होगा both A and B. We can clean. Okay, सैनिटाइजर से भी हमारा हाथ क्लीन होता है और सोप से धोने से भी क्लीन होता है, बट कंटिन्यूसली सैनिटाइजर यूज नहीं करना है. इफ यू हैव द सोप, है ना, तो सोप से हाथ हमेशा धोना चाहिए. इफ समवेयर यू आर ट्रैवलिंग, अगर कहीं जा रहे हो, देन कैरी अ सैनिटाइजर. ओके. Number 3 is you have pick the healthy food. अब हमें healthy food pick करना है. Okay. Okay, pick the healthy food. Okay,
ये 3 ऑप्शन है ना? तो इन तीनों में से कौन सा चीज हमें हेल्दी रखना है? कौन सा चीज? Cleaning outside. So these are the answers for your choose the correct answer. ठीक है? ओके, देखो नंबर 1 का okay, it is in see page 77. You will see the option choose the correct answer. Number 1 का है how many times in a day should we brush our teeth? 2. Okay, we can clean our hands with soap, sanitizer, both A and B. Both A and B. सोप से भी करते हैं हम, सैनिटाइजर से भी करते हैं. तो आंसर इज बोथ A and B. Okay. Alright, now the next is pick the healthy food. That is first is क्या है? Vegetables. And number 4 you have the C option. C option C is your answer. ठीक है? I hope सबने लिख लिया है. Okay, now in number B. Okay. Okay, page number 4. Look at the pictures. And now look at the pictures. Match each body part. Match each body part to the thing we used to care for it. To the thing we used to care for it. To the thing we used to care for it. We used to care for it. Okay? नेटवर्क इशू यहाँ तो ठीक है. Okay, Jayesh, check your internet. It might be their problem. तुम्हारे इसमें प्रॉब्लम होगा. Okay, you just see there. Okay. First one. Okay, I just write it. तुम लोग कॉपी में ऐसे लिखना या फिर you just मैच करना. First का क्या है? Hand, है ना? Okay. Number 2, ऊपर वाला जो पिक्चर्स है उसको नीचे में मैच करना है ना? Number 2 you have head. Okay. और number 3 में you see the mouth और teeth. Okay. तो इन तीनों को हमें मैच करना है ना? For the nails we have the nail cutter, है ना? Sorry, not the hand. Like the nails. Okay. For nails we have the nail cutter. Okay. And for the hair we have the comb. We should always comb our hair, है ना? And for number 3 we have teeth के लिए क्या है? We have the toothbrush. What do we have? We have the
टूथ ब्रश। तो बुक्स में बेसिकली पिक्चर्स दिए हैं, तुम लोगों को मैच करना है। ओके, फोटोज देकर तुम लोगों को मैच करना है। इन कॉपीज यू कैन राइट इन दिस वे, ठीक है। हाँ बिल्कुल ड्राइंग कर सकते हो। इफ यू कैन ड्रॉ यू कैन ड्रॉ इट, और यू वांट टू राइट दिस वे, इस तरह से भी लिख सकते हो। ओके, अंडरस्टूड। और क्वेश्चन आंसर हम लोग जैसे ही क्लास स्कूल खुलेगा, ओके, और ऑफलाइन क्लासेस शुरू होगा, तब हम लिखेंगे चैप्टर 12 का भी और 13 का भी। ओके, जिस चैप्टर्स का हमने क्वेश्चन आंसर नहीं किया है वो हम स्कूल में ही करेंगे। फॉर नाउ, अभी के लिए जो जो एक्सरसाइज है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, चूज द करेक्ट आंसर हो गया, वो सब हम अभी बुक्स पे या फिर नोटबुक पे करके रखेंगे। और उसके बाद जब स्कूल लगेगा तब मैं आप लोगों का ये वर्क चेक करूंगी। ओके, नाउ सब लोग पेज नंबर 78 निकालेंगे। ओके, नाउ एवरीवन टेक आउट पेज नंबर 78। ओके, पेज 78, मेकिंग कनेक्शंस में, है ना, इसमें देयर यू आर सीइंग देयर, वहाँ पे क्या है, योगा के बारे में दिया गया है ना। नाउ टुडे यू विल लर्न अबाउट द व्हाट इज योगा। ओके, वहाँ पे कुछ पिक्चर्स में बच्चे कुछ आसन कर रहे हैं, तो वो क्या आसन कर रहे हैं इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। नाउ इन योगा, योगा क्या है? ओके, व्हाट इज योगा? इट इज ऑल्सो अ एक्सरसाइज. It is an exercise that keeps our body and mind healthy. Okay, okay. Yoga is a, so what is yoga? It is a, yoga is a kind of exercise. Okay. जिसमें हम लोग बहुत तेज नहीं दौड़ रहे, बहुत कुछ नहीं कर रहे, लेकिन एक कुछ आसन करके हम अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग भी बना रहे हैं, एज वेल एज हमारे माइंड को भी, ओके, माइंड को भी शांत रखता है, रिलैक्स रखता है, एज वेल एज हमारे बॉडी को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। ओके, ये तुम लोगों को घर पे करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम लोग समझने के लिए, ठीक है। घर पे तुम लोग योगा प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना, बट ये सिर्फ तुम लोगों को समझाने के लिए कि योगा एक्चुअली क्या है, ठीक है। ये घर पे करने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे जो आसन दिखाया मैं सिर्फ तुम लोगों को समझा रही हूँ कि किस किस टाइप का आसन होगा। ओके, ठीक है। Yes, yes, yes. This is the last class. This is the last science class you have. Okay. Now, what does yoga help with? Okay. अब योगा किस किस चीज में help करता है? First, yoga is a kind of exercise that keeps us healthy, है ना? Body and mind को healthy रखता है ना? अब what does yoga help? Yoga helps us to keep our body and mind strong, है ना, to keep our body strong. Second
ओके, और हमें एक्टिव और फ्रेश रखता है। ओके, और ब्रीथ, एक हर तरह के आसन होते हैं, है ना। सपोज तुम लोग यहाँ पे भी स्कूल में भी हम योगा सिखाते हैं ना सर, तो हर टाइप का योगा होता है। जैसे ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, है ना। कोई भी काम करने से पहले यू जस्ट ब्रीद इन, सांस अंदर लो, सांस बाहर लो। ओके, दिस इज अ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग भी बोलते हैं ना। ओके ओके, दिस ऑल्सो, ये भी हमारे बॉडी को, माइंड को शांत करने के लिए एक योगा ही है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, है ना। तो ठीक है, तो वो बुक में इन पेज नंबर 78 फर्स्ट यहाँ पे 4 आसन दिखाया गया है ना योगा का। तो फर्स्ट आसन को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट, एक लड़की, शी इज सिटिंग, है ना, वो बैठी है ऐसे लेग्स क्रॉस करके, ऐसे बैठी है, तो उसको किस टाइप का आसन बोलते हैं, हम इसके बारे में जानेंगे। अब तुम लोगों का क्लास आई थिंक टुडे आज थोड़ा जल्दी हुआ, ओके, बट यू जस्ट बी वो देखते रहो, क्या बोलते हैं, नोटिस मैसेजेस चेक करते रहो। जब स्टार्ट होगा देन यू कैन गो कमेंट, ओके, ठीक है। हाँ जयश, ओके। अब समटाइम्स क्लास 1 का क्या होता है, जल्दी होता है, कभी लेट होता है, ओके। तो तुम लोग आई थिंक 12 जब 12 बजे के बाद तुम लोग मैसेजेस चेक करना शुरू करो। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, जैसे ही मैसेज आता है, तुम लोग ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। ओके, तो हम फर्स्ट आसन के बारे में जानेंगे। तो जो पहला गर्ल हु इज सिटिंग, है ना, जो क्रॉस करके बैठी है, क्रॉस करके, ओके, तो उसको हम बोलते हैं पद्मासना या फिर पद्मासन, ओके। और जिसको बोलते हैं लोटस पोज, ओके, इसको क्या बोलते हैं, लोटस पोज, ओके। जो गर्ल अपना लेग क्रॉस करके बैठी है, ओके, एकदम स्ट्रेटली, है ना, लोटस पोज बोलते हैं, या फिर उसको बोलते हैं पद्मासन। क्या बोलते हैं इसको? पद्मासन, ओके। तो इस पद्मासना, ये आसन करने से, ये योगा एक्सरसाइज करने से क्या होगा, इट विल हेल्प अस फील काम एंड रिलैक्स। दिस आसना इट हेल्प अस टू फील काम एंड रिलैक्स, ओके ओके, इट हेल्प अस टू फील काम एंड रिलैक्स फील होता है, ओके। इसको बोलते हैं पद्मासना। क्या बोलते हैं इसको? पद्मासना, अंडरस्टूड। नाउ नंबर 2, ओके। नंबर 2 में एक बॉय है ना, जो सीधा ऐसे पोजीशन में बैठा है, ओके, हाथ सीधा ऐसे क्रॉस करके, है ना, जस्ट 2 फीट ऐसे करके, हाथ ऐसे सीधा करके पोजीशन में है, राइट। तो उसको बोलते हैं एरोप्लेन पोज, ओके। नंबर 2 का है, क्या है, एरोप्लेन पोज, ओके। और इसको बड़े बड़े क्लासेस में इसको बोलते हैं वॉरियर 3 पोज, ओके ओके ओके। ये है एरोप्लेन, वो जो फोटो में जो बॉय करके आ रहा है, दैट इज द एरोप्लेन पोज, ओके। दैट इज ऑल्सो अ योगा का आसन है, इसको बोलते हैं एरोप्लेन पोज। वो क्या करता है, इट हेल्प्स इन बैलेंस एंड स्ट्रेंथ, ओके। स्ट्रेंथ का मतलब है ताकत, क्या है, स्ट्रेंथ का मतलब है ताकत, ओके। ये पोज, ये एरोप्लेन पोज करने से वो क्या होता है, हमारे बॉडी में बैलेंस होगा और हमें ताकत, अंदरूनी ताकत मिलेगी, ठीक है।
उसने एक पेड़ पे उधर लगाया है, तो उस पोज को हम क्या बोलते हैं? वी विल लर्न। ओके, सो नंबर 3, you have the वृक्षासना। ओके, और इसको हम क्या बोलते हैं? ट्री पोज। ओके, इसको बोलते हैं ट्री पोज। ओके, हाँ जयेश अपनी मम्मी से बोलो नहीं पढ़ाई। ओके ओके, नंबर 3 इज वृक्ष आसना। ओके, तो ये वृक्ष आसना पोज से क्या होता है? हमारा बैलेंस और फोकस। ओके, अगर हमारा कोई भी काम में फोकस नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते, है ना? तो वृक्ष आसना क्या करता है? ये आसना करने से, ओके, एक ही दिन में तो नहीं हो सकता, है ना? रोज प्रैक्टिस करने से बैलेंस हेल्प्स इन, ओके, इट हेल्प्स इन बैलेंस एंड improves focus। ठीक है, ओके, ये बैलेंस और फोकस इंप्रूव करने में हेल्प करता है दिस आसन। ओके, ओके, नाउ लास्ट वन यू सी, एक चाइल्ड कंप्लीटली ऐसे लेटा हुआ है ना, उसका हाथ कंप्लीटली नी में है, तो वो कौन सा आसन कर रहा है? नंबर 4, लास्ट वन इज यू हैव द, लास्ट को बोलते हैं बालासन। क्या बोलते हैं? बालासन, और वी कैन कॉल इट, उसको क्या बोलते हैं? चाइल्ड्स पोज। ओके, इसको बोलते हैं, लास्ट वाला क्या है? चाइल्ड्स पोज। ओके, इससे बॉडी क्या होता है? इट हेल्प्स अवर बॉडी रिलैक्स एंड रेस्ट। It helps our body to relax and rest। ठीक है, ओके, तो लास्ट वाला पोज क्या था? बाल आसना। ओके, अब मैं तुम लोगों को एक एक फोटो दिखाऊंगा जिसमें कैसे कैसे पोज, 4 पोजेस है ना। नाउ वी विल सी। ओके, फर्स्ट क्या था? पद्मा आसना इमेज। ओके, सी, दिस इज कॉल्ड द पद्मा आसना इमेज। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, ओके, दिस इज द लोटस पोज। देखो इसका लेग पूरी तरह से क्रॉस है ना? ओके, सो दिस लेग्स कंप्लीटली क्रॉस है, ऐसे इसको बोलते हैं लोटस पोज या फिर पद्मा आसना। बिल्कुल जो आप फोटो में किया है, बिल्कुल वैसे। ओके ओके, इससे क्या होता है? हमारी बॉडी काम और रिलैक्स होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट पोज इज वी हैव द एरोप्लेन पोज ना। नाउ
ओके, हाथ पूरा ऊपर ऐसे सूर्य नमस्कार जैसे करते हुए, है ना। आफ्टर दैट लेग्स कंप्लीटली ऐसे क्रॉस्ड, ओके। उससे क्या होता है, बैलेंस भी होता है और हमारा फोकस भी होता है, हमारा बॉडी भी बैलेंस हो रहा है और हमारा फोकस भी इंप्रूव होता है। ओके ओके, understood? So this is an example of vrikshasana. This is an example of vrikshasana. वृक्ष का मतलब क्या हुआ, पेड़ हुआ, है ना, ट्री का पोज। ओके, ओके, नाउ लास्ट वन वी हैव द बालासन। क्या है, लास्ट वन इज वी हैव द बालासन। Okay, so see, this is the child's pose. Okay, hands again, knees completely bent है, हाथ को ऐसे किया गया है, that is the child's pose. Okay, okay, this is the बालासन, ये child's pose है। Okay, ये बहुत ही सिंपल योगा एक्सरसाइज है, इसको हम घर पे भी कर सकते हैं। Okay, and see the last pose is the बालासना pose। तो ये चार पोज करने से क्या होता है, हमारा बॉडी इट रिलैक्सेस, इट रिलैक्सेस आवर बॉडी। ओके, अंडरस्टूड? नाउ we have the last one exercise. You see, here are exercises that you can do to have fun and stay healthy. Unscramble to find out the names. Page number 78 में, okay, you do this as your homework. Okay, okay, page 78 में making connections के नीचे, okay. Okay, इसमें unscramble the words. Okay, this you will do as your homework. Okay, तो 4 दिया गया है, unscramble, उसको scramble करके